In our previous lecture on Indian polity, learn from the master series, we had dealt with the features of the Indian Constitution, and we were discussing the second aspect, that is the sources of the Indian Constitution. कहां से हमारा संविधान के विभिन्न आयाम जो है वो कहां से लिए गए हैं, द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्रेंड्स, ये सेकेंड एस्पेक्ट है विच वी हैड ऑलरेडी बिगन इन आवर प्रीवियस क्लास, और जिसको हम लोग आगे बढ़ाना है इस प्रक्रिया को. फ्रेंड्स, when we come to the sources of the Indian Constitution, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, विच इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारी नौकरशाही है, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एंड विच इज नोन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स एज द व्हाइट हॉल सिस्टम. इस व्हाइट हाउस सिस्टम को हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया है. ये दो चीज मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं. वस्तुतः फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सिस्टमेटिकली देखिए, वीडियोस वॉच कीजिए, हर चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती जाएगी. तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, it has been borrowed from Great Britain, right? Then the bureaucratic system, नौकरशाही, which has been taken from, which is known as the White House system, and it has been taken from Great Britain. इसके बाद हम लोगों ने देखा मित्रों फंडामेंटल राइट्स, द कॉर्नर स्टोन, फंडामेंटल राइट्स, द कॉर्नर स्टोन ऑफ सिविल लिबर्टीज. और मैंने आपको बताया पिछले क्लास में कि इट इज बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में. प्लीज को वीडियोस को रिविजिट कीजिए और केयरफुली समझ लीजिए. जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें देयर वर मेनी एनॉमलीज, बहुत विसंगतियां थी.
नतीजन कुछ इश्यूज पे काफी मुकदमेबाजी हुई। तो उस समय पहले जो फेडरल चीफ जस्टिस थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जस्टिस जॉन मार्शल, उन्होंने कुछ फार रीचिंग लैंडमार्क जजमेंट्स दिए। इन फार रीचिंग लैंडमार्क जजमेंट पर आधारित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में पहले 10 संशोधन किए गए। यही पहले 10 संशोधन को संकलित करके द बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। द बिल ऑफ राइट्स Constitution of the USA. फ्रेंड्स, अब जो चौथी चीज हमारे संविधान में विवेचना हम लोग को करना है, ये कहां से लिया गया? दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दैट इज द फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सिद्धांत, फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन ऑन इट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इस पार्ट को, it is contained in part 4 of the Constitution of India, and this is known as the conscience of the Constitution. संविधान की अंतरात्मा कही जाती है, conscience of the Constitution. दूसरी चीज, it embodies the concept of socialism and an egalitarian सोसाइटी। अब सोशलिज्म क्या है? एक समतावादी समाज है जिसमें समाज के संसाधन समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच होते हैं। और ये कितना सबलाइन कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये दिगर है कि आज के दिन साम्यवाद एक प्रकार से कह लीजिए कि एक असफल अवधारणा बन गई है, लेकिन आइडियोलॉजिकली इट इज सो सबलाइन। देखिए कि कैसे कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को डिफाइन किया था। Come a socialist revolution, the means of production will be socially owned, social discrimination will be totally banished, and the fruits of production will be equitably distributed among the members of the society. In such a milieu, and with the passage of time, man will gradually transcend the barriers of caste, color, and creed, and then to be good, to be just, to be kind to one's neighbor will be man's primal carnal instinct. हिंदी रूपांतरण, जब साम्यवादी क्रांति आएगी तो समाजवाद के उत्पादक तंत्र, उत्पादन के तंत्र समाज के स्वामित्व में रहेगा, सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा और समाज के उत्पाद समाज के सदस्यों के बीच बराबर बराबर बांटे जाएंगे। ऐसे माहौल में वक्त गुजरने के साथ इंसान
जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल के दकियानूस बंटवारे से ऊपर उठ जाएगा और तब अच्छा होना, सहिष्णु होना, सद्भावी होना, मानव होना, मानवीय होना, अपने पड़ोसी के प्रति ही इंसान की मौलिक प्रकृति बन जाएगी। अर्थात इट विल बी अ हायर इवॉल्व्ड ह्यूमैनिटी। एक बेहतर समाज, एक सहिष्णु समाज की स्थापना साम्यवाद द्वारा होगी। The third thing that is incorporated in this, it incorporates the Gandhian principles. और चौथी चीज स्पेशली जो आर्टिकल 51 में है वो ये है कि इट इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलिज्म। concept of cosmopolitization globalization एंड इंटरनेशनलिज्म। कैसे? देखिए, अब इसलिए मैंने ये चीजें आपको बता दी कि पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म इनहेरेंट, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा ये फोर्थ पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, एंड इंटरनेशनलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कहां से लिया गया है, दैट इज द मोस्ट क्वेश्चन। तो देखिए, माना यह जाता है कि इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन of the Republic of Ireland। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, जो सेलिएंट एस्पेक्ट है आपके संविधान का, वो ये है द फेडरल प्रिंसिपल्स। ये संघीय सिद्धांत, जिसको कि कहा गया है एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो द फेडरल प्रिंसिपल्स, यू नो, दे हैव बीन बोरोड the federal principles, they have been borrowed from the Constitution of Canada। ठीक है, Constitution of Canada। Friend, going a little further, the concept of preamble। The concept of preamble, देखिए यूं तो the concept of preamble is inherent in the Philadelphia Declaration of the Independence of USA on the 4th of July 1761।
ये सबसे पहले ये चीज इन द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन of the 4th of July 1776, जबकि कहा गया था, ये डिक्लेरेशन देखिए क्या है, अमेरिकी संविधान के ठीक पहले ये प्रस्तावना है, that we the people do hereby acknowledge that all men are born equal and are endowed among other things the right to life, liberty and the pursuit of happiness. तो देखिए एक प्रकार से ये प्रियम्बल है अमेरिकन संविधान का, और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। लेकिन प्रियम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the concept of preamble as an integral part of the constitution has been borrowed from the Constitution of Australia. The concept of preamble, यही विरोधाभास है, of preamble as an integral part of the constitution has been borrowed from the Constitution of Australia. ऑस्ट्रेलिया, ये दिमाग में रखिएगा, राइट। देन वी कम टू द 7th पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज they are inherent in part 4A, of the Constitution. That is Article 51A. Or these fundamental duties have been borrowed from the then Constitution of the United Union of Soviet Socialist Republics, USSR, and they were added to the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआती दौर पे हमारे संविधान में नहीं था, ये 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के बाद ऐड किया गया। एंड ऑफ कोर्स द 42nd Constitutional Amendment Act was the handiwork of the स्वर्ण सिंह कमिटी। ये दिमाग में रखिएगा, बाद में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हर चीज को बैठा के रखिए। देखिए, आपको कंपटीशन फेस करना है। एवरी माइन्यूट थिंग विच इज ऑफ कंसिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट टू यू। तो द 42nd Constitutional Amendment Act was enacted in 1976 at the behest of the स्वर्ण सिंह कमिटी। उसी ने पूरा प्रारूप तैयार किया था इस एक्ट का, और उस एक्ट से fundamental duties were incorporated into your constitution, right? And the fundamental duties have been borrowed from the constitution of the then Union of Soviet
सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये तीनों चीज आपको दिमाग में रखना है। पहली चीज, इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन on the recommendation of, by the 42nd constitutional Amendment Act 1976। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हर चीज नोट करना जरूरी नहीं है। कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी एंड इट हैज बीन बोरोड from the constitution of the then Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Union of Soviet Socialist Republics। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम देयर। नाउ वी कम टू द emergency provisions. The emergency provisions of your constitution are incorporated between Article 352 to 360, and these deal with several types of emergency, जिसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। प्लीज उसको एक अलग हेडिंग में हम लोग को बात करना है। इंटरनेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, डिसलोकेटिव इमरजेंसी, फेलियर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसके आर्टिकल 356 है। हाँ, ये सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये इमरजेंसी प्रोविजंस लिए कहां से गए थे? तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए थे, अभी आई कम टू द एक्ट 8 इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल्स 352 to 360। देखिए, हिटलर के आने से पहले जर्मनी में एक गणतंत्र का गठन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद when the government of Kaiser Wilhelm II was defeated in the First World War, then Kaiser Wilhelm II abdicated, उन्होंने राज्य त्याग दिया, and a Republican government was set up under Marshal von Hindenburg, ठीक है, जिसको कि वीमर रिपब्लिक कहा जाता है। ये रिपब्लिक 1924 से लेकर 1933 तक कार्यरत थी जर्मनी में। ठीक है, जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ अडोल्फ हिटलर। अब इस वीमर रिपब्लिक के संविधान में और भी चीजें जो है प्रशासनिक थी, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजंस था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे संविधान के सृजनकर्ताओं ने सीधे इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से ले लिया. बोरोड फ्रॉम Constitution of the Weimar Republic of Germany. The Weimar Republic of Germany. और जैसा कि मैंने बताया, आप भूल न जाएं, सेट अप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर before the advent of Adolf Hitler. Right? Friends, लास्ट एस्पेक्ट जो कि हम लोग को कहना, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा, वो है अमेंडिंग प्रोविजंस. द अमेंडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोवा, द अमेंडिंग प्रोविजंस article inherent in Article 368 of the Constitution. These amending provisions have been taken from the Constitution of साउथ अफ्रीका. देखिए 1920s के दशक में साउथ अफ्रीका में एक संविधान सृजित हुआ था. ये मैं उस संविधान की बात कर रहा हूं जो कि नेल्सन मंडेला के आने के बाद संविधान साउथ अफ्रीका का बदल दिया गया, और जो रंगभेद, अपार्थाइड था, इन एलिमेंट्स को वहां से हटा दिया गया. लेकिन बिफोर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, देयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका which was framed in the 1920s. और ये इमरजेंसी अमेंडिंग प्रोविजंस हमारे वही कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. ठीक है ना, बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया है. तो फ्रेंड्स, दैट कंप्लीट्स 2 सबसेक्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द salient features of our constitution and the sources of our constitution. ठीक है, now we come to a very important subsection. देखिए, बेसिकली द प्रियम्बल के बाद हम लोग करेंगे द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट्स के बाद शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड देन फंडामेंटल राइट्स and blah blah blah. Of course, in that sequence we'll be going ahead. So we come to a very important part of the constitution, that is the preamble. The preamble, you know, the preamble.
and it is very important. The preamble as it stands embodies the basic philosophy and ideology of the Indian nation. Huh? It embodies the basic political philosophy and ideology of the Indian Republic. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to obtain for its citizens क्या भाई justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the country, equality of opportunities and of privileges, and to promote among them all, do hereby in our Constituent Assembly on this day, the 26th of November 1949, adopt, enact and give to ourselves this Constitution. क्योंकि ये संविधान हमारा बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और उसी दिन हमने अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन किया, इसीलिए 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है. ठीक है, तो व्हाट आई सेड वाज दैट द प्रियम्बल embodies the basic political ideology and philosophy of the Constitution of India. The preamble was tabled before the Constituent Assembly on the 13th of December. ये पहला Constitution framing session था. 9th को of December 1946 को Sachidanand Sinha was elected the pro tem chairman of the Constituent Assembly. 11th of December 1946 को Dr. Rajendra Prasad was formally elected as the president of the Constituent Assembly. And 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को the Objectives Committee headed by Jawaharlal Nehru tabled the preamble before the Constituent Assembly. So the preamble was tabled before the Constituent Assembly on December 13, 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, who was the chairman of the Objectives Committee.
by a resolution known as the objectives resolution. ठीक है, तो इट वॉज टेबल्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए प्रियम्बल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो डिफरेंट है। 3 लोगों का योगदान प्रियम्बल के फॉर्मेटाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 3 people who played a very, very important role in the formatization, structuring and decoration of the preamble were three people who played a very important role in the formatization the structuring and the decoration of the preamble. The preamble कौन कौन थे भाई ये? फर्स्ट ब्योहर राम नारायण सिन्हा, he was a resident of Jabalpur and a student of नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस को आप जानते ही हैं, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के एक महान चित्रकार थे, है ना? तो ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अब ब्योहर राम नारायण सिन्हा ने पूरा डिजाइन और डेकोरेशन तैयार किया आपका प्रियम्बल का। प्रिपेयर्ड द डिजाइन एंड डेकोरेशन, प्रिपेयर्ड द डिजाइन एंड डेकोरेशन, decoration of the preamble। ठीक है, इसीलिए देखिए अगर प्रियम्बल को आप देखेंगे तो दाहिने तरफ बड़े हल्के से हिंदी में राम लिखा है प्रियम्बल के पन्ने पे दाहिने तरफ। ये राम बताता है कि ब्योहर राम नारायण सिन्हा ने ही पूरी इसकी डिजाइन तैयार की। ठीक है, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हमारे संविधान में भी राम लिखा है,
यूं तो पूरा संविधान ही राम की अनुप्रेरणा से कृत हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये राम जो लिखा है व्यवहार राम नारायण सिन्हा के नाम से है ना। ठीक है, दूसरा पर्सन जिसने कि हमारे प्रियम्बल को फॉर्मेटाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में और डेकोरेट करने में अहम भूमिका निभाई, वो जो है फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, एंड दैट वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये भी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के ये कह लीजिए कि अनुयायी थे या छात्र थे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के। और देखिए बार बार ये नाम मैं ले रहा हूं, आपको थोड़ा सा होगा याद रखिएगा कि इसके प्रवर्तक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो प्रोजेनाइटर थे वो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। द यंगर ब्रदर ऑफ ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो प्रेम बहादुर नारायण रायजादा was a scion of the Bengal School of Painting। इन्होंने पूरी कैलीग्राफी बड़ी सुंदर अक्षरों में देखिए हमारा प्रियम्बल लिखा है, अगर उसको आप देखें तो वशीभूत हो जाएंगे। हाँ, तो ही प्रिपेयर्ड द कैलीग्राफी ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द स्ट्रक्चरिंग एंड डेकोरेशन ऑफ द प्रियम्बल, दैट इज अनदर वेरी फेमस नेम, दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले थे, वही जिला बैतूल जहां से कि ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। ही बिलोंग टू बैतूल, और इन्होंने ही डिजाइन द अशोका लायन कैपिटल on the front page of the Constitution and also made contributions to its decoration। ठीक है ना, डिजाइन द अशोका लायन कैपिटल on the first page of our Constitution। फ्रेंड्स, तो ये तीन लोगों ने अहम भूमिका निभाई हमारे प्रियम्बल को डेकोरेट करने में। नाउ लेट अस कम टू salient aspects of our preamble, the core concepts of our preamble। Let's have a look into it। The core concepts of our preamble। सबसे पहले
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereignty. Sovereignty मतलब प्रभुसत्ता. Our country is free and independent in its policies, in its governance. It is not subject to subjugation by any country. तो हमारा देश प्रभुसत्ता है. अब ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से है? देखिए, बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी में जाएं तो जॉन ऑस्टिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन ऑस्टिन थियरी ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है, जो कि किसी के अधीन ना हो. लेकिन आधुनिक काल में इंटरनेशनल रिलेशंस में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत मानी जाती है द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, या द मोनरो डॉक्ट्रिन जिसको कहा जाता है, जिसको कि जेम्स मोनरो ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1823 में, उसमें उन्होंने लुजियाना परचेज, जो फ्रांस से लुजियाना अमेरिका ने खरीद लिया, तो इस पर उन्होंने कहा था. तो अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स ऐसा था कि बार बार फ्रांस और इंग्लैंड, यूरोपीय शक्ति उसमें दखल देते थे. 1823 में जेम्स मोनरो ने बड़े सरोज शब्दों में कहा कि दैट दिस कॉन्टिनेंट, दैट इज अमेरिका, intends to remain the master of its own home. अमेरिका अपने घर का स्वामी रहने की बात करता है, ये बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा. तो इसको द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता है. जिसको कि आम शब्दावली में लोग मोनरो डॉक्ट्रिन भी कहते हैं. तो यहां से ये कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी का लिया गया है. दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान का, दैट इज सेकुलर. कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये शब्द सेकुलर अर्थात पंथ निरपेक्षता, ये 30 इयर्स वॉर के बाद एक संधि हुई थी, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, उसी में सबसे पहले ये आया था. फर्स्ट फीचर इन द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आफ्टर द 30 इयर्स वॉर in the Treaty of Westphalia, after the 30 Years' War, in 1648, ये कहता है कि राष्ट्र, the state shall not interfere in the religious affairs of its citizens. एक लाइन. तो ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का हो गया.
हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट ये है कि द स्टेट शैल पॉजिटिवली इंटरफियर, द स्टेट कैन इंटरफियर इन अ पॉजिटिव मैनर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो देखिए सेकुलर का दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट इंटरफियर in the religious affairs of its citizens। ठीक है। और इंडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है, इंडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द स्टेट कैन इंटरफियर and encourage in a positive manner in the religious affairs of its citizens। तो जाहिरी तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, इंडिया में ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। देन वी कम टू सोशलिज्म। अच्छा, अब इतना याद रखिएगा कि द टर्म सेकुलरिज्म was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment। शुरू में जब हमारा संविधान बना तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, बस इतना ही था, sovereign democratic republic। लेकिन 42nd Constitutional Amendment के बाद ये दो शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा भाई? तो सेकुलर और सोशलिस्ट। ठीक है। तो द टर्म सेकुलर was incorporated into the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act Amendment Act 1976। Right? Friends, then we come to socialist, the third concept। मैंने अभी समझाया था आपको कि सोशलिज्म क्या है, मार्क्स ने जैसा डिफाइन किया। लेकिन सच है कि जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि टू वाइप अ टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख से एक आंसू पोंछना है, इसीलिए साम्यवादी व्यवस्था लागू करना है। ठीक है।
तो द इंडियन स्टेट endeavors to create a just, equitable and egalitarian social order. Right? Clear? So third concept is socialist. The Indian state strives to create a just, equitable and egalitarian social order. To wipe a tear from every eye. जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द लखनऊ कांग्रेस सेशन में कहा था. प्रेसिडेंशियल एड्रेस of the Lucknow Congress session. तो उन्होंने कहा था कि हर आंख से एक आंसू पोंछना है और ऐसे ही देश और समाज की परिकल्पना हम करते हैं ना. द टर्म सोशलिज्म वॉज अगेन, ये पहले हमारे संविधान में नहीं था. पहले हमारे संविधान में बस सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. लेकिन टर्म सोशलिज्म वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वंस अगेन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. The term socialism was incorporated into our constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act (1976). ठीक है. तो फ्रेंड्स, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील कर लिया. दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. अब डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दीज आर द टू कॉन्सेप्ट जिसको जो बच गए हैं. और इसके बाद जो भी हमारा, देखिए 9 चीजें हमारा संविधान प्रोवाइड करता है भारतीय जनता को. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 ये हो गया. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. छठा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. 7वां, फ्रैटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. 8वां, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. 9वां. तो ये 9 कॉन्सेप्ट्स में 3 हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ. अगले क्लास में मैं बचे हुए 6 डिस्कस कर लूंगा. विद दिस I thank you for the class. Have a nice time.
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने फिर कहा, नाउ द ट्रम्पेट समन्स अस अगेन, नॉट एज अ कॉल टू बियर आर्म्स, टू आर्म्स वी नीड, नॉट एज अ कॉल टू बैटल, दो एम्बैटल्ड वी आर। जॉन एफ कैनेडी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है ये। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन शेड्यूल। May God bless your efforts with crowning success. Thank you for the class. Good day. Thank you.